Neyman-Fisher factorization theorem. If we are continue from the definition of the sufficient statistic, and we know that the statistic y1 is or not sufficient statistic for theta. ये ज़रूरी नहीं है कि जो sufficient statistic y है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती sufficient statistic. But one thing is very important कि जो हमारे पास y1 है whose PDF is that is f of y1 theta. Sometime it is very difficult to find the PDF of the sufficient statistic. जो हमारे पास sufficient statistic के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं वो बाज़ दफ़ा उसका PDF निकालना बाज़ केसेस में हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. So then obviously we have to find out some sort of sufficient statistic. Then we find another way to find the sufficient statistic, and that way is given by the Neyman-Fisher factorization theorem. So the statement of this theorem is, let x1, x2 up to xn denote the random sample from a distribution that has the probability density function or probability mass function is by this one, where theta belong to its parameter space. The statistic y, that is t x1 up to xn, is a sufficient statistic for theta if and only if we can find two non-negative functions denoted by h and g in this way that the giant distribution f of x1 up to xn can be represented in terms of h of t into x1 up to xn into theta, and g, that is the function of x. So we can see that here that g is a free from theta. So the simple way is that we have a giant distribution, उसको हमने दो हिस्सों में रिप्रेजेंट करना है. एक हिस्से में वो थीटा का फंक्शन होगा और दूसरा जो हमारे पास हिस्सा होगा that is free from theta. So how we proceed? Now we am going to present the proof of this theorem. As I said that कि इसमें हमने जो giant distribution है उसको दो factors में represent करना है, और we prove this theorem by taking two steps. One step is that is the necessary step. The other step is the sufficient step. So for necessary part, suppose that the statistic, let's say I call it s, which is the function of s, that is x1 up to xn, is sufficient. Then we have the conditional distribution f of x given s. We can easily write it as that is f of x theta over f of s theta. As we know that k f of x s जो है basically that is equal to f of x, because s is a subset of x. So definitely जब हम इसको represent करेंगे तो वो f of x ही हमारे पास आ जाएगा. So we can further write it as like f of x theta, that is basically f of x given s into f of s theta. हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है. And we also know that we have a result that f of x given s basically that is equal to f of s x over f of s, and we know that this is a proper PDF and that is equal to 1. So we can put it here, this result, that let's say I represent it in term of g function, that is g as x into, let's say I call it h of s theta. So you can see that ये जो हमारे पास पार्ट है that is there is free from theta, so we can write it as g of x into h of s theta. So as we have partitioned the giant distribution,
the sample observation in two components, one that contains theta and other that is free of theta. So the proof is complete for necessary condition. For sufficient condition, for sufficient part, we may proceed as that. Just I am writing that the previous result, that is x theta, that is, let's say, g of s theta into h of x. Let's say I represent it as equation 1, and we assume that it holds. So if it holds, then we can further have some result that g of s theta को हम ऐसे लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ इंटीग्रल. ये बेसिकली मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है. जब हम इसको कैसे ऑब्टेन करेंगे, जब हम तमाम जो हमारे पास सैम्पल डेटा है, दैट इज़ बेसिकली इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स थीटा, इसको अगर हम इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो हमारे पास जो सफिशेंट पार्ट होगा वो हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी फॉर ऑल एक्स, वेयर इंटीग्रेशन जो है is done for all x, all values of x. तो हम अगर हम अपने तमाम जो हमारे पास सैंपल है उसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, और उसमें से जो सफिशेंट पार्ट है वो हमारे पास उसकी मार्जिन आ जाएगी, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सिंस वी नो दैट वन is hold, therefore we can write it as f of s theta, that is basically integral g of s theta into h of x dx. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. सो क्योंकि इसमें x इन्वॉल्व नहीं है, तो वी कैन टेक इट आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन. सो दैट इज g ऑफ s थीटा इंटू इंटीग्रल ऑफ h ऑफ x dx. तो लेट्स से अगर इसको हम रिप्रेजेंट कर दें g ऑफ s थीटा, लेट्स से अनदर फंक्शन दैट इज k ऑफ x, वेयर k ऑफ x basically is a function of x, is some function of x, some function of x. So from the above finding we can write it as now f of x theta divide by, हम डिवाइड कर रहे हैं सफिशेंट और नेसेसरी कंडीशंस के जो रिजल्ट्स हैं, दैट इज़ एस थीटा. तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ऑफ एस थीटा इंटू एच ऑफ एक्स, एंड द अदर वन इज़ आल्सो जी ऑफ एस थीटा इंटू के ऑफ एक्स. सो बेसिकली जो हमारे पास रिजल्टिंग फंक्शन आएगा दैट इज़ म्यू ऑफ एक्स, यानी free from theta. Since the conditional distribution of sample given x under the assumption 1 holds is independent of theta, therefore it satisfies the condition of being a sufficient statistic. Hence, if 1 holds, then that s is a sufficient statistic for theta. So you can see that here this function is free from theta, so we can see that it is a sufficient statistic. अगर इस थ्योरम को हम समराइज करें तो we can summarize this theorem as this problem. This theorem states that if we partition the giant distribution of the sample in two components, one containing the statistic s and a parameter theta and other containing the function of x, so then we say that s is a sufficient statistic for parameter theta. So this problem, this theorem can also be used
टू फाइंड द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। तो बाज़ दफ़ा जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया है कि बाज़ दफ़ा हमारे पास जो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होती है वाई उसका PDF निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो सम कॉम्प्लिकेशंस उसमें आ जाती हैं। तो ऐसी सूरत में हम अल्टरनेटिव वे से भी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस थ्योरम। और बड़ा सिंपल है इसमें कि जाइंट डिस्ट्रीब्यूशंस को हमने दो पार्ट में प्रेजेंट करना है। एक में हमारे पास जो पार्ट होगा वो दैट इज़ द पार्ट ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक एंड द पैरामीटर थीटा, एंड द अदर पार्ट इज़ दैट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स। तो अगर हम ये प्रूव करने में कामयाब होते हैं तो वी कैन से दैट द एस इज़ ए सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा।